Good morning, friends. Welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with the MCQ discussions of law. है ना? Business law and communication. Okay. Economics रा मैं already देखी सार्चु. आज मैं देखिया Sale of Goods Act रा MCQ questions. ठीक अच्छी Sale of Goods Act 1930. तो the Sale of Goods Act 1930 applies to most of the students both movable and immovable कर दो चंदे जोड़ा की भूल तो only movable property only. ठीक अच्छी A contract of sale of goods includes contract of sale of goods both sale and agreement to sell. Okay, contract of sale both sale and agreement to sell. I have clearly explained you the difference between sale and agreement to sell. तो सेल रे कोन होतला एक्चुअली सेटा ट्रांसफर ही जीवो बट एडी ओनली प्रॉमिस थिबो खाली ट्रांसफर हेबा पे एटा फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक अछि. When the ownership of goods is transferred immediately from seller to buyer, it is called देखो मु जोड़ा कहउतले ओनरशिप जोड़ा अछि सेटा इमीडिएटली ट्रांसफर हे जिवो सेलर रु बायर को. In a contract of sale, when the goods are in possession of a third party, the ownership is transferred to the buyer when contract of sale होछ रे when the goods are in possession of a third party, गोटे third party पाखरे goods अछि तो ownership केतळ को ट्रांसफर होछि when acknowledges that goods belong to the buyer. से जेतळ को acknowledgement दोछ माने information दोछि that goods belong to the buyer, then only सेटा कोन हबो contract of sale रे ownership टा transfer हबो. तापर the principle of caveat emptor under sale of goods act means let buyer beware. Caveat emptor is also known as let buyer beware. Under section 9 of the sale of goods act, what is a reasonable price? Question of fact कोन पे कौन पहले से आंसर हो. Market price is based on the estimated facts. माने say particular period of time में what are the facts that are going on, है ना? So that's why it is always a question of fact. Before the enactment of the Sale of Goods Act, the provisions regarding sale of goods are were contained in which? Indian Contract Act 1872. Delivery under the Sale of Goods Act means delivery रो बुझे थिली मु हिंदे चार्ट करिकरी सेटा कोन हो वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. गुटे पर्सन रो अदर पर्सन को कोन हो वॉलंटरीली माने ता निजो इच्छा रे से ट्रांसफर करिवो गुड्स, हैला. Future goods have been identified in the Sale of Goods Act under which section? The section number 2(6). Section number 2, subsection 6. Wherein a contract for sale of goods act, there is no express or implied provision as to place of delivery of the goods under section 36. The goods would be deemed to have been delivered at the किछि express provision नहीं, किछि implied provision नहीं as to the place of delivery of goods. तो एडा रे कोन होची सेक्शन नंबर 36 रे से गुड्स कोडा का कोन ना सेलर प्लेस रे डिलीवर हे जेची कोइ कि हमें assumption नहीं पाइबा. Okay, the Sale of Goods Act 1930 applies to mobile properties only. A contract of sale includes, okay, सब जे रिपीट हेछि नै. Okay, before the enactment of the Sale of Goods Act, the provision regarding sale of goods were contained in एडा हे Indian Contract हां ये पे तो है नहीं ना. तो देखिए okay, delivery, okay, future goods. Okay, the Sale of Goods Act 1930 is based on एडा काउंट ऑफ खाली 1893 तो एडा based on सोगा 1893 सोगा 1893 इस सोगा ऐसे होगा जैसे होगा वैसा होगा देखा जाए जो होगा देखा जाएगा. Not the right of an unpaid sender, not the right of unpaid seller under the SOGA 1930. Right of willing to without the willing to where the property in goods has passed to the buyer. माने से कोची जेतळ गुड्स से प्रॉपर्टी टा पास ही जी बायर को
तार पाखरे किछि राइट होनी से डेलीवरी टा विथ होल्ड करिया पे बुझि पाला बाकी जारे कोन तार पाखरे राइट होछ लेन एंड प्राइस लीन ऑन गुड्स हे परियो स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट हे परियो रीसेल हे परियो जहा भी हे परियो ओके Section 59 of SOGA 1930 authorizes the buyer to either A or B or C. कोडा हेले भी परियो best MCQ you have ever seen. Okay, देखो. Okay. The price in a contract of sale may be all of the whether the stipulation of time in a contract of sale of goods is essential. Stipulation of time ମୁଁ କହିଥିଲି या बिसरे डिस्कशन करथिली ऑलरेडी तो कौन कहूची सिए The stipulation of time in a contract of sale of goods is essential. जितलो कौन it's the essence of the contract and it depends on the terms of the contract. किंबा time is the essence in the contract of sale of goods. दीडा जाओ करेक्ट हे पारेबो बुझि पालो जति तार टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रे से टाइम धरि के किछि स्टिपुलेशन ऐड ऑन करछि सेडा हे पारेबो किंबा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जति खाली टाइम को धरि के आगा हेछि मेन फैक्टर को तो सेडा मध्य स्टिपुलेशन हे पारेबो There is an implied undertaking in a contract of sale of goods that seller has the right to sell the goods obviously से जहां भी करियो ता इच्छा जति जे बायर केडी नै ओके हां Where under a contract of sale, the property of goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called. But where the transfer of property is the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called. तो दीडा जारे कौन कौन कहबार अछि हैला फर्स्ट सेडा को कहउछ हमें सेल एडा होछि एग्रीमेंट टू ओके से कोची कॉन्ट्रैक्ट से द प्रॉपर्टी दा ट्रांसफर होची सेलर रो बायर को बट एडी कोन होची गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस सेडा होची एग्रीमेंट टू सेल केबे आस्थिला एडा फर्स्ट टाइम पे 1 जुलाई 1930 ओके which of the following modes of delivery of goods is considered effective for a valid contract of sale तीनटा जगह हमर एक्चुअल डिलीवरी सिंबॉलिक डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तीनटा जगह थाउची हला एक्चुअल कोन थिला नॉर्मली डिलीवर करिया सिंबॉलिक माने कीज दबो हाउस माने किनले से कीज दबो कार देले कीज दबो दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी माने according to the sale of goods which two of the following are defined as goods काइंडली इमूवेबल प्रॉपर्टी आछि कि सेल ऑफ गुड्स रे आसुनी दैट्स व्हाई हां सिंबॉलिक डिलीवरी लैंड द इमूवेबल गुड्स हां तो से दिनसो कोडा देला कीस कोन लैंड सहित कि लैंड रो डिलीवरी आछि कि ओनरशिप आसुची खाली लैंड रो नै सेला घर रो कार रो हला से टाइप्स रो कौन भलो कौन चलो भाई सिंबॉलिक डिलीवरी रे एक्चुअली से गोटा का एग्जांपल सबले देत होची कार और केस सबले सेडा का देत होची ठीक अछि हां लैंड रेफ्रिजरेशन तो देखो हेडी ownership in contract of sale property in goods refers to ownership of goods देखो तमे goods अंडर रे कोन आछि देखो से सब जिंसा खाली सोगा रे कवर हेतियो एति तो तमर सिंपल जाउनी ना in case of unascertained goods the property passes to the buyer when चार्ज जो लिखी थिली unascertained हेले कोन हबो ऑर्डर प्रकार हेले कोन हबो फर्स्ट ascertain हबो appropriate हबो कोन वाओ केते मन रखिछ
The pledge of goods under SOGA is covered under, is also known as a bailment. Bailment माने तते गोटे जिंस दिया आइथिबो तते तार जिम्मेदारी थिबो सेटा सरला पर यू हैव टू ट्रांसफर इट आफ्टर सर्टिफिकेट माने से को पर्सन को कहया ताकू दबु नले ताकू डायरेक्टली दे दबु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से पर्सन को हैंड ओवर कर दबु से which section of SOGA act defines unpaid seller section 45 in a sale or approval basis ownership is transferred when buyer accepts the goods. Price under the Sale of Goods Act means money consideration. The implied condition as to merchantable quality applies when merchantable quality माने कौन बिकिया पे योग्य हैला सेलेबल कंडीशन रे जोड़ा थिबो तो सेडा सब बळे को मतलब इम्प्लाइड कंडीशन रे आसी ना गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन माने से जदि डिस्क्रिप्शन दे दी छि मते 1 kg 2 kg ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स रो दरकार तो दे हैव डिस्क्राइब्ड यू समथिंग एंड यू हैव टू कैरी आउट द पर्टिकुलर ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू दैट डिस्क्रिप्शन आ से गुड्स गुडा को डिस्क्रिप्शन हिसाब रे थियो मात्र सेलेबल कंडीशन रे आगा नथिबो तो सेडा कोन मर्चेंटेबल क्वालिटी आछि सेडी नाही. In case of sale by sample, there is an implied condition that bulk shall correspond with the sample. Say sale by sample माने आ गया हाँ. A document of title to goods includes title to goods. बुझिला. Transfer of title by non-owner is specific cases कौन जेतळो ताको रास्ते रे जाओ जो किछि हेले ओडे मिले हला तो से जदी सेल करूची ओनर को लाइक फाइंड आउट करे ट्राई करला बट ताको ओनर मिललानी तो ही सेलिंग इट पेरिशेबल गुड्स थिबो कि रास्ते रे मिलला ताको एफर्ट्स लगेला पर भी मिललेनी तो से टाइम रे कोन सेडा वैलिड हबो बाकी जगह रे सेरा सब बळे इनवैलिड हबो. Goods perishing before sale but after agreement to sale leads to that a good important question. Before sale but after agreement to sale hala to the sale agar he jei thibo ta pare kon hela am kon फरक पड़छि but agreement करिछि सीए but actually sale ला हे नि आगा तो contract automatically void हे जो काहे कि subject matter अगर destroy हे गला सेडी बुझि पाला ना नहीं बुझिला नहीं एडा कोन auction sale is complete when thak 1 2 3 ए बाबा. The rights of unpaid seller are classified into a rights of unpaid seller are classified into okay CIF means एडा को टास्क होछि बारंबार cost insurance and freight included. In case of goods sent on approval risk remains with एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. सेलर कोन पई सेलर ना से अप्रूव करि पारो रिटर्न भी कर दे पारिबो तो से गुड्स कोन हेले सेलर ऊपर आसीबो सेडा हेला मन रखिबो एडा. ब्रीच ऑफ कंडीशन अलाउज द बायर टू repudiate माने कोन कहितली ओके. The passing of property depends primarily on passing of property depends primarily on को particular जिंस न सबले intention of the party so the intention अगर सेडी create इले valid जिंस अगर create हबो. A specific goods means identified and agreed upon at the time of contract. Contingent goods अछि future goods अछि specific goods अछि unascertained goods अछि केते जिंस हम पढलो. Which of the following is not an essential element of contract of sale एडा भी important question. Warranty हला not an essential element of contract of sale. Contract of sale पे सेडा valid नहीं गोटे customer satisfaction build up करिया पे we are just providing the warranty. A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. एडा मु लेखि थिली कोन तार मीनिंग वाओ
मते दुसु नथिला आले ना मु पढी पारिबिनी मते सेटा पढी कहलो A condition is stipulation. स्टिपुलेशन माने कोन एटलीस्ट स्टिपुलेशन रो तो मीनिंग कहि दे कथा कोन Stipulation मतलब दाम जोड़ा मानो छोड़ जनरल एक्जिस्टिंग फैक्टर बस जनरल नॉलेज तो से कहूची गुटे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रे कोन माने एडजेसेंट थाउच प्री डिटरमाइंड थाउच हां माने जो सब्जेक्ट मैटर को अटैच हेकरी कोन थाउच दोज आर द कंडीशंस आ बाकी तो जहा एक्स्ट्रा प्रोवाइड करछ दोज आर द वारंटीज द डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हां एडा भी इंपोर्टेंट बहुत थोड़ा आछ द डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर रो मीनिंग कोन लेट द बायर बीवेयर तो सेटा could is not applicable now when the buyer has relied upon the skill and judgment of seller जदि ता पाखरे किछि ऑप्शन नै ऑनलाइन शॉपिंग इज द बेस्ट एग्जांपल से टोटली का ऊपर डिपेंड हेगिरि अछि सेलर मानक ऊपर तांकर स्किल तांकर जजमेंट ऊपर टोटली डिपेंड हेगिरि अछि बुझि पाले ना नै प्रॉपर्टी इन द गुड्स इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट मींस ओनरशिप मन रखबे हला बारंबार आछि select the odd one out it's constructive हेतला odd one out हे नथन constructive काहे एक्चुअल सिंबॉलिक से सब अछि ना कंडीशनल एडी एडा गुटे मन रखिबो जानि परिया न एस्टोपिल लीगल जीवन सब मार्केट एजेंट गला कोडरे मर्केंटाइल एजेंट अंडर नै मर्केंटाइल एजेंट माने के से तो जो अपॉइंट करछ एटॉर्नी लीगल टर्म हां ये पढ़ोछ A agrees to buy 200 liters of oil from B's in the place of cotton कोन लीगली से नहीं सेडा गोटे कांसेप्ट भी हेई नथिबो आमे जानू बट ए तीनटा ऑलरेडी कांसेप्ट ना सेति पे सेडा ऑड बनाओ दैट मे और मे नॉट बी अ कांसेप्ट क्लियर 200 liters of oil from bees it is a partial good sense of the question exam question से ऑयल किनला कॉटन बदल रे ऑयल नेला a finder can sell the goods if एडा ऑलरेडी डिस्कस करछ देखो फाइंडर ऑफ द गुड्स केतोळ गुड्स सेल करि परियो perishable in nature in pretended bidding sale is बुझि पालो pretended bidding माने कोन ना एक्चुअली जतलो बिडिंग प्रोसेस टा होथियो केते यात्रा लोक जे थाउ चंदी से माने कोन जान जानि की रेट बढ़िया पे के किछि न करे से माने टेकी कहि दै थाउ चंद आ जतलो से बायर जानि दबो कि सेटा प्रिटेंडेड बिडिंग तो से पूरा जिंसडा को कोन करि परियो वॉइड करि परिबो वॉइडेबल माने एडा कि ता पाखरे ऑप्शन अछि सेटा वॉइड करिबा पे दैट इज वॉइडेबल तो बायर चाहिले सेटा वॉइड कर देबो तो से धरा पड़छ ओके राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द अनपेड सेलर वेयर द बायर एडा मध्ये इंपोर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी हां थिला स्टॉपेज इन ट्रांजिट माने कोन रास्ता रे रखि देई पारिबो जतळे से जान लागी बायर आगा इनसॉल्वेंट हे जेछ डिलीवरी ऑफ कीज ऑफ अ गोडाउन वेयर गुड्स आर केप्ट एडा डिलीवरी ऑफ गोडाउन वेयर गुड्स आर केप्ट से गुड्स पे से गोडाउन रो चाबिडा दोछ हला सेडा Dash is a form of combination of buyers to prevent competition among themselves at auction sales. Knockout agreement. से माने कौन करचंदी combination of buyers. से माने गुड combination रे आछंदी कि जहा को आसीबो जा रेंज को आसीबो करिया तो एटा healthy competition practice ता. In an auction sale the property shall be sold to जे highest bid करिवो. Sellers can raise the price by fictitious हां एटा भी बारंबार आस्था होची can raise the price by fictitious bids in an auction sale with the help of puffers माने एडा होची जान जानि कि जो लोकाने खाउछन जे जान जानि प्राइस को इन्फ्लेट करियो चेष्टा करछन सेमिति प्रकार लोकाना हम कहछु puffers an auction of sale is complete on the okay where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of the seller and auctioneer
knowingly takes any bid from the seller or any such person, the sale shall be treated dash by the buyer. कौन से हिच देखो, sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of seller. कार right नहीं से start कर दीजिए bidding, and the auctioneer knowingly takes any bid from the seller or any such person. जानी दी से कौन कर ता बकरे right नहीं, but illegal manner से कौन कर ताड़ो bid accept कर दो. The sale shall be treated as dash. बुझिला question डेबे टिके बड़ा question ना तो सत्य में कुछ. Okay. A valid contract of sale includes. Okay. Property in the Goods and Sale of Goods Act 1930 means deals with important cash credit के बेहद से नहीं sale of goods आसिबो कहेंगी हमको definition रे कौन देची सेटा आसिबो act रे कौन देची sales रो definition देची goods रो definition देची तो sale of goods in general ठीक है मान रखियो. The events of force majeure render the contract of sale of goods. Force majeure. That's a type of illegal activity. Forceful activity. Okay. So this is void. Pledging of goods obtained on sale or return basis will एडा भी important. माने देखो तमो goods किछि मिले छि sale of return sale or approval basis रे मिले छि. Okay. You are using the goods to pledge माने सेडा pledge करके you are getting some amount माने तू सेडा automatically accept कर लाले ना तो सेडा कौन हला contract of sale got completed there. बुझि पालो. The term unpaid sales includes एडा बटी के मन रखो agent of the sellers seller agent मध्ये include हबो काहेंगी जेते जे पैसा रिसीव हेनी तारा काम होचे पैसा रिसीव करियार और ता बिहाफ रे ये काम करछ बिल तो ये एजेंट आगा हैला ना. Under section 11 of the SOGA 1930, the time of payment can be dash of the essence of contract. Time of payment तांकर agreement हिसाब रे हबो. Even if तांके words से discuss कर देले तांकर agreement जहाँ कहूची that will be the final. An agreement to sell is executory contract. मु कहि भी गुड दिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रो ओवरऑल छोटा कहि आज तुमको नोट्स लिखि की देबी तो इंस्टेड ऑफ दैट कौन करिया हमें मेजर जिंस कवर करिवे तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट माने जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हे जेची एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट माने जोटा फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम रे एग्जीक्यूट हबो. दैट्स द बेसिक पॉइंट. तो एग्रीमेंट टू सेल होची एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट सेल होची हमरा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मन रखिबो. ओके. अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज फ्यूचर गुड्स कौन थिला माने सेटा प्रोड्यूस हबो तापर सेल हबो. सेल हां. The definition of document of title to goods given in SOGA is exclusive माने आउरी ऐड हबो. inclusive sorry exclusive माने सेति की आगा inclusive माने आउरी ऐड हबो. breach of warranty gives a right to claim damages माने वारंटी जदी से भांगिला तो कौन हबो डैमेज क्लेम हे पारिबो. Goods that are identified and agreed upon at the time of contract. Goods को identify तो कर दीज. Under section 27 of the SOGA, the term goods does not include stock and shares. Hello. A valid contract of sale includes एडा तो already हेची agreement to sell. A had 10 horses. He agreed to sell one horse to B. This is a contract of sale of unascertained. A document issued by warehouse keeper or a wharfinger stating that the goods specified in the document are in the warehouse or his custody is. कौन होला? बुझिले नहीं कि document रा ना कौन पहुंचछ पा. As per section 5(1), which of the following is recognized when a contract of sale is made? The price and delivery of goods may be. कौन? Enforceable on. Okay. In case of carriage of goods by sea, where the seller has to deliver the goods to the buyer at the port of destination, the contract is known as ex-ship contract. खाली नाड़ आमान. Process of identifying the goods and setting apart as per the intended quality or description. Where goods are known to be dangerous to seller and he also knows that buyer is ignorant about it, there is an implied warranty of
बायर भी इन्फॉर्म रहिबार अछि सेलर भी वार्न करियार तार दायित्व रहुछि जेतळे वो डेंजरस गुड्स हाउ से लोक इग्नोरेंट थाउछ जस्ट लाइक टोबैको प्रोडक्ट्स caveat emptor does not apply on देखो सैंपल रे डिस्क्रिप्शन रे जदि सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन रे चारटा जा केस रे एटा हबो M sold goods to B. The payment was to be done after 1 month. B did not make the payment. The right of lien can be exercised by M when goods are not handed over to anyone. ठीक अछि X purchased knives. The knives were found to be blunt, not suitable for cutting. This is a breach of not suitable for cutting. माने सेडा जो पर्पस पे तो मैं आने सेडा यूज करिया पर्पस रे नहीं तो दिस इज अ कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी. Mercantile agent means the person बुझिला ना से कंसाइन करिवो सेल करिवो असाइन करिवो. CIF contractors contract for sale of document. CIF carriage insurance freight. तो से CIF contract होची इट्स अ contract for sale of document. Goods the acquisition of which is contingent about the happening or non-happening of certain events will be treated as contingent goods. The definition of document of title exclusive. Tapreda heithila which of the following rights are available to unpaid seller against the goods? Koda koda right of lien, stoppage in transit, resale. Khali 1 2 or 3. Okay, option number A. Where third party fails to fix the price but the buyer has received and appropriated the goods, then the buyer is liable to pay reasonable price. Jitolo third party fix korchi but buyer has received and appropriated goods, the buyer is liable to pay reasonable price. Breach of warranty gives right to claim damages or claim new goods. Jodi new goods option रे अछि new goods habo to new goods nai jitolo ko damages habo. Sell means a person sells or agrees to sell dita jaga asibo. Okay, ये जा सब किछि होनी. Document of title of goods, bill of lading. Transfer of document of title to goods sold to buyer amounts to symbolic. देखो transfer of documents खाली documents तो हमें दल्ला damages होतिला ना. हाँ जितलो को damages तो ते option रे थिबो खाली तो damages हबो. goods आछि कोले goods थिबो option हिसाब रे. The rule as to passing of property as laid down in section 20 shall apply when time of payment of the price okay price and time of delivery of goods both are postponed. Hala passing of property as laid down in section केतोळे apply होची time of payment of price or time of delivery both are postponed. An act which an intended bidder is discouraged or dissuaded from bidding in an auction sale is damping. ठीक अछि से द पेपर discouraged or dissuaded from bidding से लोक जो करथिला ताको पफर कहउछु जा लगी ये डिस्करेज ही जी ताको डैम्पिंग कहउछु जा लोक आकु मिलला ताको डैम्पिंग कहउछु जे अफेक्टेड हैला जे अफेक्टेड है ताको डैम्पिंग एडा करिबा नेगोशिएबल दा नेक्स्ट क्लास रे करे. ठीक अछि थैंक यू.